Hello friends, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture I am going to talk about some MCQ questions on AC circuit part 1. Actually I have developed 4 parts, part 1, part 2, part 3 and part 4 on this AC circuit. So these questions will be useful for solving or for facing the GATE examination, some competitive examination like that. Any competitive examination you can face based on these questions. Okay, so I'm going to talk about it. This is only for your test, how to attempt like that. So this is the question number 1. In the AC circuit, what less lagging component of current is responsible for the production of. First of all, I want to talk about this lagging component of current. What less lagging component of current means what? First is what less means what? It is either inductive or capacitive, pure inductive circuit or pure कैपेसिटिव सर्किट. क्यों? पावर कंजम्पशन कहाँ नहीं होता? इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस में. रेजिस्टेंस में तो होता है, तो इट इज नॉट ए वाटलेस. इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है, इट इज वाटलेस. लैगिंग कंपोनेंट मींस व्हाट? करंट इज लैगिंग. करंट कहाँ लैग करता है? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में. सो वाटलेस लैगिंग कंपोनेंट ऑफ करंट मींस इट इज ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, राइट. अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट कौन सा हो सकता है? मैग्नेटिक की इलेक्ट्रिक? मैग्नेटिक सर्किट. ओके, सो पार्ट सी. 90 degree phase difference exists between voltage and current. 90 degree phase difference exists in voltage and current in AC circuit. अभी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, मतलब क्या होगा? ये like this, voltage, this current means what? यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा, वहाँ करंट जीरो होगा. जहाँ करंट मैक्सिमम होगा, वहाँ वोल्टेज जीरो होगा. When voltage is maximum, current is neither zero, no. When voltage and current both reaches maximum, no. When voltage is maximum, current is zero, yes. Or vice versa. C part is correct, right? So this is the concept. You must know how to attempt. No need to mug up. I'm rubbing it. Okay. Question number 3. An inductor is supplied with 100 volt AC supply with a frequency of 10 kilohertz, passes current of 10 milliampere. The value of inductor. Okay, the value of inductor, right? So first of all, XL equal to क्या होता है? XL equal to V upon I, right? So V upon I. V कितना है? 100 upon, what is the value of I? 10 milliampere. 10 milliampere मतलब यहाँ -3 आएगा, तो यहाँ +3 आ जाएगा, राइट ना. 10 milliampere मीन्स 10 into 10 raised to power -3, so यहाँ ऊपर आ जाएगा. So 10 कैंसिल हो गया. So you are getting 10,000 ohm. XL. XL इक्वल टू क्या होता है? 2 pi FL. 2 pi FL. Okay, इक्वल टू व्हाट? 10,000. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10,000. ओके, सो 10,000 कैंसिल. L इक्वल टू व्हाट? 1/2 पाई. इज इट क्लियर? क्यों? यहाँ 10,000 है, किलोहर्ट्ज, 10 किलोहर्ट्ज मतलब 10,000, ये 10,000 तो कट जाके 1 हो जाएगा. सो L इक्वल टू 1/2 पाई. जस्ट यूज द कैलकुलेटर, यू विल गेट. व्हाट इज द आंसर यू विल गेट? जस्ट आई एम गोइंग टू यूज इट. 1/2 पाई, 1/2 into 3.14. So it is 160 millihenry. I am getting it, right? I am rubbing it. Okay. Question number 4. What will be the current? Circuit current in the purely inductive circuit having inductance of this and supply voltage is 230. Okay. So first of all, what we will do? We will find the current XL.
XL इक्वल टू क्या होता है 2 pi f L. This is the XL and you have to find I ना. So I equal to what? V कितना है V 230 upon this 2 pi FL. So voltage is given 230, 2 pi F is given 50 Hertz, L is given 0.02 Henry. So approximately ये आएगा कुछ 62 point something. So you will get answer is sorry, you will get this is 230 and this is 2 pi FL. FL 2 pi FL. You will get approximately 6 point something. Okay. So just using the calculator, I am getting the answer is 36.6 ampere. First answer is correct. Okay. Next problem 5. Find the total voltage applied in a series RLC circuit when I equal to this, VL equal to 30, VC equal to 18, R equal to this. So actually it is a RLC series problem. So first of all, we will calculate the VR. What is the value of VR? VR equal to I into R. I equal to कितना है 3 into 10 raised to power minus 3 into R equal to 1000 equal to 3 volt. Okay, so you know VR equal to 3 volt. Just I am coming. So I am getting 3 volt. That is VR and V equal to what? V equal to what? VR square plus VL is more than VC, so VL minus VC, VL minus VC square and under root of that. So this is 3 square plus this VL minus VC is 12. Okay, under root of that. So approximately you will get more than 12. That is D answer is correct. Okay. So this is the series resonance problem. Okay. Question number 6. In an RLC circuit, which of the following is always used as a vector reference? In RLC series circuit, we have a voltage across our resistance VR, voltage across inductance VL, voltage across capacitance VC, total supply voltage V. चार हमारे पास 4 वोल्टेजेस हैं, करंट एक ही है, बिकॉज इन सीरीज सर्किट करंट फ्लो होता है, तो इट इज बेटर टू टेक करंट एज ए रेफरेंस, राइट. सो क्या रेफरेंस लेंगे हम? करंट. और ये तो याद रखना, इंपीडेंस रेजिस्टेंस तो रेफरेंस लेते नहीं है, याद या तो वोल्टेज रेफरेंस लेते हैं या करंट वेक्टर डायग्राम, राइट. In an RLC circuit, the power factor is always, in RLC circuit, the power factor will always positive, negative, zero, depends on the circuit, it depends on the circuit. क्यों? 3 कंडीशन आती हैं. कौन कौन सी 3 कंडीशन आती हैं? पहली कंडीशन आती है XL इक्वल टू XC, रेजोनेंस कंडीशन, पावर फैक्टर 1 होता है. क्लियर? XC में बी ग्रेटर देन XL. थर्ड कंडीशन क्या है? XL में बी ग्रेटर देन XC. सो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सर्किट, राइट. सॉरी. Question number 8. A coil with 15 ohm resistance in series with 8 ohm inductive reactance connected in parallel with capacitor with 12 ohm capacitance reactance across an AC supply source. The circuit power factor. सर्किट पावर फैक्टर एक्चुअली Z इक्वल टू क्या होता है? R कितना है? 15. क्लियर? एंड यू कैन से XC इज मोर देन
XC is more than XL because XC का कितना है 12 ओम और XL कितना है 8 ओम. So plus J XL XC minus XL कितना आएगा 4. क्यों? ये 12 है और ये 8 है तो X Z इक्वल टू होता है R. सॉरी XC मोर देन है ना तो इट इज नॉट प्लस इट इज माइनस R माइनस J XC minus XL. XC is more than XL. So R15 minus J4. Clear? So you can convert into polar form. Magnitude Z आएगा of the angle minus phi आएगा. Minus phi क्यों आएगा? ये माइनस है तो ये माइनस. Clear? So you can find the power factor cos of phi. Power factor is cos of phi. This phi. Okay. So just put the value. Convert into rectangle into polar form, you will get this one and you will get phi. So cos of phi, if you do it, just cos of phi, I'm going to use it calculator. This is the answer, question number 8. I'm getting 0.68. 0.68, it is leading. Because XC is more, so it is 0.68 leading. I'm getting 0.68. So 0.68 lagging भी और leading भी है. तो lagging होगा कि leading? It depends on the XC is more than. So XC is more than मतलब current will lead. So power factor will be leading, right? Question number 9. What is the correct expression for the phase angle in an RLC series circuit? Phi क्या होता है? tan inverse XL plus XC wrong. XL minus XC. Phi equal to tan inverse? No, it is divided by R. Yes, this may be, both may be. So it is not a tan inverse. Phi equal to tan inverse नहीं है. This is also phi equal to tan inverse XL minus XC upon R. Right, this may be correct. Okay, so 9. Question number 10. The resonant frequency. Above, below, whatever there, the resonant frequency, the current in the inductor lags the voltage in series RLC circuit. Okay, so we know if you draw it, power factor versus frequency. Clear? So if you see curve ऐसा आता है power factor का, this is power factor cos phi. Power factor, this is होता है unity. कहाँ होता है? At this particular frequency is known as FR, resonant frequency पे. This at resonant frequency power factor equal to 1, right? And below that it is less than 1 and यहाँ पर भी less than 1 है. Now above the resonant frequency the current in the inductor lags the voltage. अभी बताओ, current in the inductor lags the voltage. Current in the inductor lags the voltage in series RLC circuit. Lagging power factor कब आने वाला है? When lagging power factor कब आने वाला है? Lagging above or below the resonant frequency, the current in the inductor lags the voltage. Current in the inductor lags the voltage in RLC series circuit. Okay, क्या हो गया बोलिए आप? Lagging मतलब lagging power factor कब आने वाला है? जब XL more than XC. XL कब ज्यादा होगा? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो XL will increase, XC will decrease. So okay, क्या होगा? आंसर इज A, above. बिलो करोगे तो क्या होगा? XC will be greater than. बिलो में ये क्या रीजन आएगा? XC will be more than XL. Okay, so above. The resonant frequency, the current in the capacitor leads. अभी ये सेम प्रॉब्लम है बट लीड्स आ गया. लीडिंग कब होगा? जब XC is greater than XL. XC is greater than XL कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी कम होगी. बिकॉज XC कब ज्यादा होता है? जब फ्रीक्वेंसी XC इक्वल टू क्या होता है? 1/2 पाई FC. अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो XC will be more. Clear? So below. This answer is below. Okay. 11, 12.
The coil with 5 ohm resistance in series with 8 ohm inductive reactance connected in parallel across 12 ohm. Okay, so the circuit impedance क्या होगा? 15 Z इक्वल टू क्या होता है? Z1 Z2 upon Z1 plus Z2. If the two branches in parallel, you can use this formula Z1 Z2 upon Z1 plus Z2. What is the value of Z1? 15 plus J8. ओके, और Z2 कितना है? दिस -12 -J12 अपॉन Z1 प्लस Z2 कौन से फॉर्म में ऐड करेंगे? रेक्टेंगल फॉर्म में। तो 15 -J4 आएगा। वाई इट इज दिस? अगर ऐड करेंगे तो 15 का 15 रहेगा, ये प्लस J8 है माइनस J12 सो दिस इज we have to do, we have to convert, this is multiplication, this is division, so कौन से फॉर्म में करेंगे? पोलर फॉर्म में। convert this 15 plus J8 in the polar form, minus J12 into polar form, 15 minus J4 into polar form, and if you do it, you can do that calculation. So I'm just doing ये 15 plus J8 है, ये 15 minus J4, so more than 12. Answer will be, obviously answer will be 13.1 ohm. I'm without doing anything, I'm not going to do any calculation. After writing this is 15 plus J8 and this is 15 minus J4, so this is more than this, तो यहाँ आपका क्या आएगा? this upon this, slightly more than 1 into 12 करेंगे तो it is 13.1. These all are wrong answers. Okay, so without doing any calculation I can get it. If you do it, you will get the answer. नहीं तो आप नहीं करते, क्योंकि कैसे देखो ना आप, ये 15 प्लस J8 का मान लो 15.3 आ गया, ये 15 माइनस J4 का क्या आएगा? 15.2 आएगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये इन दोनों का डिवीजन क्या आएगा? मोर देन 1, 1.1, 1.2 लाइक दैट, इन दोनों का इंटू 12 करोगे तो 13 मोर देन 12 ही आएगा ना। सो बाकी के आंसर तो कम है, तो दैट इज आंसर 13.1 ओम, राइट। करोगे तो आप कैलकुलेट करो, यू विल गेट सेम आंसर. I don't want the angle. In series RLC circuit at resonance, series RLC circuit at resonance FR इक्वल टू क्या होता है? FR इक्वल टू 1/2 pi root LC, ओके, इक्वल टू 2 पाई इधर जाएगा तो क्या आएगा? 2 पाई F दैट इज ओमेगा इक्वल टू 1/रूट LC. तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC. सो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू 1, राइट है? ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू 1 है, आंसर है यस. ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू 1, सी आंसर इज करेक्ट. ओके, ठीक. Question number 14. The power factor of a series RLC circuit at its lower half power frequency. Resonant frequency, lower half power frequency. अगर आप if you draw it, frequency versus say current, for example current, you know ऐसा कुछ करवाता है. We have discussed. This is at resonant. Clear? ये lower, so this frequency is known as FR. Lower
लोअर हाफ पावर मतलब ये F1 यहाँ आएगा, दिस इज कॉल्ड एज लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. ओके, सो एट दिस साइड क्या होगा, इफ यू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी x इक्वल टू क्या होता, 1 upon 2 pi f c. So when the frequency will decrease, xc will increase. So capacitor xc बढ़ेगा मतलब xc will become more than xl. तो क्या हो जाएगा, ये लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग. ओके, 15 क्वेश्चन नंबर 15. द डायनेमिक इम्पीडेंस ऑफ RLC पैरेलल सर्किट L by CR होता है. एक्चुअली आई हैव नॉट डिस्कस्ड, बट at resonance, in case of parallel resonance condition, Z dynamic equal to the L by CR. Okay. Question number 16. Nature of power factor in a series RLC circuit when I equal to 3 milliampere, VL equal to 30. Forget it. Just see this part only. क्या है, VL is more than VC, इसका मतलब है XL is more than XC, right? VL is more than VC means XL is more than XC. तो सर्किट will behave like RL सर्किट. RL सर्किट में लेकिन पावर फैक्टर आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. What will be the circuit power factor in the purely inductive circuit? What will be the power factor when in case of purely circuit power factor in the purely inductive circuit having inductance of this and supply voltage is this? Purely inductive power factor क्या होगा, lagging, zero, right? So answer is what? A is correct. Purely inductive circuit power factor will be 0, right? The current in a circuit is given by this, I equal to 50 sin 3 140. How long it will take for the current to rise to minus 50 ampere? See here, if you draw it, so characteristic will be like that. Clear? For 50 hertz, this is 3140, right? 314 का मतलब frequency कितनी होगी, 50 hertz. So what is the time required here? This is 20 millisecond. Because t equal to क्या होता है, time period for one cycle 1/50. That is 20 millisecond. That is 0.0 सेकेंड, 0.02 सेकेंड. इसका मतलब हाफ साइकिल के लिए कितना लगेगा, 0.01 सेकेंड. और नेगेटिव 50 मतलब 50 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है ना ये 50. दिस इज 50, सो दिस इज -50. तो यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगने वाला है, ये 0.01, ये 0.005. सो यहाँ तक पहुंचने के लिए व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, 0.015. सी आंसर इज करेक्ट. Without doing anything you can get it. अगर otherwise use the calculator you will get it, right? Sorry. For the vector diagram shown in the value of circuit elements, both voltage and current are in the same phase. इसका मतलब कौन सा एलिमेंट है, प्योर रेजिस्टेंस. सो प्योर रेजिस्टेंस मतलब that is the answer, may be correct, pure R. So 100/5, R equal to 20 ohm. That is the answer. C answer is correct, right? You can see both voltage and current are in the same phase. So you will get C answer is correct. 20. For the wave diagram shown in figure, you can see this wave diagram. You can say voltage is this one. And when the voltage is maximum, current is 0. इसका मतलब है purely inductive या purely capacitive circuit है. Now who is lagging, current is lagging, so it is a purely inductive circuit. You can say current is lagging, voltage यहाँ से शुरू हो रहा, current यहाँ से शुरू हो रहा, so it is current is lagging by 90 degree. So कौन सा circuit है, purely inductive circuit. C is correct, right? Current is lagging. Question number 21.
A coil having resistance of 5 ohm and inductance of 0.1 Henry is connected in series with capacitor. The voltage across 200 volt 40 hertz is applied to the circuit. The value of capacitance at which current is maximum. But that is very important condition. In case of it, this is the example of series resonance condition. क्यों? Current is maximum. So in case of that, Xc equal to क्या होगा? What is the value of C पूछ रहा है. Xc equal to क्या होता है? XL. XL you can find. XL equal to what? 2 pi F कितना है? 40 into 0.1 Henry. So X equal to XL. XL equal to 2 pi FL. You can find XL. So you will get XC. So you know XC, that is 2 pi 40 into 0.1. You X equal to XL equal to क्या होता है? 1 upon 2 pi F C. So you can get C. Clear? या ये फ्रीक्वेंसी कौन सी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक तो ये तरीका है सी निकालने का. दूसरा तरीका क्या है? एफ आर इक्वल टू क्या? 40. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी. So C unknown, everything is known. You can get the C. Just use the calculator, you will get it. मैं वेट करता हूँ. So I am getting answer 158 microfarad. 158 microfarad. A is correct, right? (22) A coil having a resistance of 5 ohm and inductance of 0.1 Henry connected in series across okay, with a capacitor of 200 volt 40 hertz is applied to the after unity power factor. मतलब resonance condition है. If frequency increase to 50, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं आप 40 से, यू आर गेटिंग एट 40 हर्ट्ज पे क्या मिल रहा है आपको? रेजोनेंस कंडीशन मिल रही है. पावर फैक्टर यूनिटी है. इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टू 50, द पावर फैक्टर विल बी क्या होगा? अरे जब एक्स फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ेगा. एक्सएल बढ़े के इट विल बिकम मोर देन एक्ससी. तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा? लाइक आरएल सर्किट. आरएल सर्किट में द करंट विल पावर फैक्टर विल बी लैगिंग, राइट? सो इट इज लैगिंग. 23. A parallel circuit consists of branch two branch A and B. Branch A has a resistance of 10 ohm and inductance of 0.1 Henry. 10 ohm and branch 0.1 Henry in series. Branch B has a resistance of 20 ohm and capacitance of 100 microfarad connected in series. The circuit is connected to single phase supply of 250 volt 50 hertz. The admittance of branch A. So please see here, branch ZA equal to what? ZA equal to R10 plus J XL. XL कितना है? XL को पहले XL निकाल लो. XL इक्वल टू व्हाट? 2 पाई 50 into 0.1. So 2 into pi into 50, 314 into 0.1, 31.4. So I am getting 31.4 ZA. Okay. So इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप. You can convert it to polar form. So Y equal to क्या होता है? Admittance magnitude 1 upon Z. Okay. Y equal to Y मतलब A ब्रांच का
1 upon ZA. So 1 upon point, this इसका magnitude जो करोगे तो you will get the answer. Just I'm getting it. I'm getting 0.03 more. Okay. Okay. Question number 24. A parallel circuit consists of branches. Same problem. Okay. The power factor of the branch A. Power factor ZA क्या है? RL सर्किट है ना. A ब्रांच क्या है? A is रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस. RL सर्किट. बोलिए. So power factor क्या होगा? Lagging. Okay. So this first A or B answer is correct. Now what is the value of ZA? ZA equal to what? कितना था? 10. R was 10 और this is plus J 31.4. Convert into polar form. So you will get magnitude Z. I am not interested. I am interested here. I will get, if you convert into polar form with the help of calculator, Z of the angle 5. So power factor क्या होता है? Cos of 5. Just use it. I am using the calculator. I am getting the answer 0.3. I am getting 0.3, but it is lagging or leading? It is lagging because it is RL circuit. So 0.3 lagging. Okay. In RL series circuit, if we connect capacitor, so up to resonance current will. In RL series circuit, if we connect capacitor, so up to resonance current will become what? Increase or decrease? Current will increase. Answer is it clear? अगर आप RL सर्किट में करंट कम होगा, लेकिन ओके, और करंट का ऐसा आता है ना. So when you connect the capacitor, so क्या हो जाएगा? XL और XC कैंसिल करेंगे तो Z will decrease, I will increase. Up to resonance current will increase. That is the answer, right? Okay. So these are the questions we have. Okay. This is the answer set. Answer किया है given. Please again see, again repeat it. Try to get the correct answer. And thank you very much for listening me carefully.